सेकंड माइक्रोवर्ल्ड। यस, आज हम बनाने वाले हैं सेकंड माइक्रोवर्ल्ड। ये मत पूछना माइक्रोवर्ल्ड क्या होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, जाके देख सकते हो। एंड हम बनाएंगे सेकंड माइक्रोवर्ल्ड ऑफ वैनम यूजिंग फोटोशॉप। एंड आई थिंक इसको बनाने में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज अभी तक किसी ने नहीं बनाया वैनम या स्पाइडरमैन का माइक्रोवर्ल्ड। सो हिट द लाइक बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली क्यूब की लेयर बनाने के लिए ये 3 टेक्सचर इमेजेस का यूज करूंगा एंड यूजिंग डिस्टॉर्ट इफेक्ट उनका शेप चेंज करेंगे। नाउ हमारा बेस क्यूब रेडी हो गया है, तो अब बारी है वैनम बनाने की। तो उसके लिए मैं ये 2 इमेजेस का यूज करूंगा एंड ये सेकंड इमेज का शेप चेंज करने के लिए मैं पपेट वार्प यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कलर बैलेंस एंड ह्यू सैचुरेशन का यूज करके वैनम का कलर सही करेंगे। Now adding more details around the Venom and mostly our shadows, so I don't think मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी।
सो हाउज इट, कमेंट करके बताओ जल्दी से, और अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दो। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड इस वीडियो को शेयर करो, किसी के साथ भी करो, आई डोंट केयर, बट शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो अभी सिखाया है वो ट्राई करो, ठीक है। बाय।